कितने ही लोग आए हैं आज तक? All right, everyone. Assalamu alaikum. Let's begin. So we were doing discrete random variables. हमने लास्ट क्लास में binomial distribution के concepts किए थे. आज हमें इसके कुछ एग्जांपल्स देखनी है और ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं. हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के क्वेश्चंस कर लिए के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए. बाय द वे, दोज ऑफ यू हु आर नॉट देयर इन द ऑनलाइन क्लास, बता लिया आपने तो कोई भी एक भी क्लास नहीं अटेंड किया ऑनलाइन. बिलाल, घर में भी पाँव दुख रहा होता है तो वो ऑनलाइन क्लास में भी एंटर करना मुश्किल होता है. ट्यूशन में क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स का पढ़नी है. नेक्स्ट ईयर जब दोबारा से दे रहे हैं सर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं एमन, कितने क्वेश्चंस किए आपने? कभी आप कह रही थी ना हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव डन, कितने क्वेश्चंस कर लिए? जी 6 से 7. टाइम नहीं मैनेज हो रहा. जो आप लोग रात को 10 बजे सोते हैं सुबह 11 बजे तक नहीं उठते, उसको थोड़ा सा चेंज करें ना. रात को 10 बजे क्लास रखे तभी सोए होते हैं, सुबह 11 बजे रखे तभी सोए होते हैं. अच्छा, ये वर्कशीट किसके पास नहीं है? रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रीट रैंडम. वो पिछला करते हैं सेट का एडमिशन आने का हां सही है. यू नो सेट का हां स्टूडेंट का सेट भी तो से शंघाई से सेट की कॉलेज पर प्रेजेंटेशन क्लास के अल्टरनेशन होगा ना. और भी बात नहीं है. कोविड वैक्सीन क्या हो रहा है? नहीं चाहिए इसके ऊपर कोई रिसर्च चाहिए क्या? रिसर्च चाहिए, लॉन्गेस्ट वैक्सीन रिसर्च काफी देर के बाद हुई है. उसने मेरे एस्ट्राजेनेका, फाइजर और साइनोवैक
जो जो हमें लगे हैं सारे वही। तो मेरे साथ सभी जल्दी मर रहे हैं। अच्छा चलें, लेट्स स्टार्ट विद दिस देन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हम ये कह रहे थे। आज हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ प्रैक्टिस करनी है। लेट्स ट्राई दिस। आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं जो बताएं पहले? हाउ मेनी डन विद एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस? एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस ऑन द वर्कशीट। At least 2 questions on the worksheet on binomial distribution. At least 2 on binomial. लेकिन ये वर्कशीट आप पूरी कर सकते हैं। इस वर्कशीट में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन आपको क्लास में भी कहा था कि आप प्लीज कर लें शुरू। जब अटेम्प्ट मोस्टली यस, बट अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि आप फाइंड क्या कर रहे हो। यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हो, ज्योमेट्रिक में कुछ और फाइंड कर रहे होते हैं, हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, तो प्लीज आप कुछ पढ़ना शुरू कर दें। आयशा, आपने कल की क्लास मिस कर दी, ट्यूसडे वाली? अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी? हमने कहा यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे कि कोई चीज रिपीट हो रही होगी एंड इट विल बी रिपीटेड n टाइम्स कोई रेपिटेशन, कोई चीज रिपीट हो रही होगी। उसमें से we would be looking for the probability of having a certain number of successes. Okay? क्या कंडीशंस हैं यहाँ पे? कुछ रेपिटेशन हो रही होती है, n टाइम कोई चीज रिपीट हो रही होती है, देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। एक को हम सक्सेस कहते हैं, दूसरे को फेलियर कहते हैं। सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटीज चेंज नहीं हो सकती, दे रिमेन कांस्टेंट। ओके, ये तीन चीजों से आपको पता चलता है कि ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई चीज रिपीट हो रही हो, दो ही आउटकम्स हो, और दोनों की प्रोबेबिलिटीज कांस्टेंट है, और आप फाइंड क्या कर रहे हो कि टोटल दफा आपकी रेपिटेशन हो रही है, लेट्स से n टाइम्स हो रही है, उसमें से कितनी सक्सेसेस आ रही हैं आपको, आपकी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। हम कुछ आज एग्जांपल देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट क्वेश्चंस। लेट्स से you roll a dice 11 times. Find the probability that you get seven factors of 25. Now, what does that mean? You're repeating something 11 times,
and you want to find the probability that out of those 11 numbers that you get in the dice पे कौन से numbers है 1 2 3 4 5 6 fair dice है sorry हाँ क्वेश्चन लिखो तो fair है और उसने स्पेसिफाई भी अगर उसने स्पेसिफाई भी नहीं किया हो कि नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं तो कितने अज्यूम करेंगे 6 फेसेस स्टैंडर्डाइज में 6 फेसेस ठीक है हाँ अब क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 5 फैक्टर ऑफ 25 फर्स्ट ऑफ ऑल 25 के फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं 1 and 5 ठीक है 11 में से 7 फैक्टर्स ऑफ 25 आए ये प्रोबेबिलिटी मतलब 7 टाइम्स आपके पास चलिए लेट मी मेक इट मोर क्लियर get a factor of 25 you get a factor of 25 7 times out of 11 ठीक है 11 टाइम्स आपने रिपीट किया है उनमें से 7 टाइम्स हैं आपके 25 के फैक्टर्स आ रहे हैं अब क्या ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है डज इट मीट द कंडीशंस क्या कंडीशंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डू वी हैव सम रेपिटेशन एंड डू वी नो व्हाट द टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशंस इज 11 रिपीट हो रहे हैं 11 टाइम्स रेपिटेशन डू वी हैव 2 पॉसिबल आउटकम्स we have 6 possible outcomes but can we somehow convert them to 2 factor of 5 could be called a success and not getting a factor of 5 could be called a failure इन दो इस तरह से दो आउटकम्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर 5 आना सक्सेस है फैक्टर 5 ना आना फेलियर है ठीक है क्या उनकी प्रोबेबिलिटीज चेंज होंगी या नहीं होंगी नहीं होंगी हर दफा वही प्रोबेबिलिटी होगी हर एक दफा आपने डाइस रोल किया तब भी वही प्रोबेबिलिटी दूसरी दफा भी वही होगी तीसरी दफा भी वही होगी इट वुड नॉट चेंज ऑल द कंडीशंस आर मेट ओके what are you looking for you're looking for getting a certain number of successes probability of getting a certain number of successes तो binomial में हम यही कह रहे होते थे तो बाइनोमियल की सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं हम क्या कहेंगे दिस इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n equal to 11 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सक्सेस को हम डिफाइन कर लेते हैं सक्सेस क्या है सक्सेस इज गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 5 फेलियर देन इज नॉट गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 5 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी 2 out of 6 which is 1 out of 3 probability of failure then is 2 out of 3 ठीक है सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटीज भी हमारे पास आ गई अब ये कैसे फाइंड करें हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ x equals r that is equal to ncr p raised to power r q raised to power n minus r just input values in that formula probability that x equals 7 that is equal to n which is 11 c 7 into p which is 1 over 3 raised to power 7 into 2 over 3 raised to power 11 minus 7 which is 4 and that will give you this probability दो factors है ना 6 में से 2 out of 6 that's 1 out of 3 ठीक है ये क्लियर है सबको ये क्या आता है अच्छा ये जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे ना 11C7 ही आपने ब्रैकेट्स में डालना है अदरवाइज तो अक्सर एरर आ जाता है बिकॉज वो 7 को पहले मल्टीप्लाई कर देगा अदरवाइज वो पहले ये मल्टीप्लिकेशन करेगा और फिर बाद में कॉम्बिनेशन फंक्शन यूज करेगा फिर वो गलत आंसर आता है ठीक है और अक्सर एरर भी आ जाता है 11C7 के अराउंड ब्रैकेट यूज करें 0.0298 that's the probability that we were looking for that's the probability of getting a factor of 25 7 times out of 11
ठीक है, अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हम कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट अ फैक्टर ऑफ 25 Okay, let's add a few more parts to it. Let's say this is part 1, or maybe part. Find the probability that you get a factor of 25 less than 3 times out of 11. How do you find this probability? अब वो तो हमारे पास वही है, n is 11, p is 1/3, and q is 2/3. And we also know the formula. That's x equals r, ncr, p raised to power r, q raised to power n minus r. कितनी सक्सेसेस चाहिए आपको, कितनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, x की क्या वैल्यू इनपुट है? लेस देन 3 टाइम्स आउट ऑफ 11. क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी? Now we want the probability of x, number of successes. कितनी successes चाहिए आपको? Less than 3 successes चाहिए. So now we say we want this probability of x less than 3. ये कैसे find करें? Sorry, 2 और 1 की निकाल लें. और भी कुछ हो सकता है 2 और 1 के अलावा? 0 भी हो सकता है. तो आप क्या करेंगे इसके अंदर? Probability of x less than 3 means you find the probability of x equals 0. Add to that probability of x equals 1 and add to that the probability of x equals 2. Because less than 3 का मतलब है या तो वो 0 है, या 1 है, या 2 है. So we add all of those probabilities up. ठीक है, ये क्लियर है? तो हमारे पास ये फॉर्मूला है बाइनोमियल में, ये इक्वल टू का फॉर्मूला है. इनइक्वालिटी अगर आएगी तो हमें वो एक एक केस अलग अलग निकालना पड़ेगा. ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें 3 दफा अप्लाई करना पड़ेगा. ये क्या आता है? 11c0 into 1/3 raised to power 0 into 2/3 raised to power 11 plus 11c1 into 1/3 raised to power 1 into 2/3 raised to power 2 plus 2/3 raised to power 10 plus 11c2 into 1/3 raised to power 2 into 2/3 raised to power 9. पहले का आंसर 1 है. पहले का आंसर 1 है. आप कह रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, फिर बाकी क्या होंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो इसकी एक केस की 1 कैसे हो सकती है? 2/3 रेज़ टू पावर 11 क्या है? 2/3 रेज़ टू पावर 11 1 तो नहीं आता. फाइनल रिजल्ट क्या आता है? चलिए इंडिविजुअली बता दें. फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0.01156 मिनिमम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अदरवाइज आंसर नहीं सही आएगा, 1 मार्क कट जाएगा. Yes, minimum 4 significant figures हर जगह पे, हर जगह पे उधर भी है, minimum 4 significant. फाइनल आंसर में 3 हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले 3 कर देंगे फाइनल आंसर जो है मोस्ट लाइकली 1 डेसिमल प्लेस से ऑफ होगा, 1 मार्क कट जाएगा. 0.0635. ओके,
देखिए आपसे कैलकुलेटर भी नहीं यूज हो रहा था, आप क्या करें? इट्स ओके, उसके पाउंड उठा कैलकुलेटर। जी बताएं। 0 पॉइंट सिक्स थ्री फाइव नाइन। ओके जी, नेक्स्ट। इलेक्शन रिजल्ट की तरह आ रही है, अगला रिजल्ट हमारे पास आ गया। जी बताएं। 0 पॉइंट 0.15896। ओके, जितना पूरा लिखना है। अच्छा आगे क्या आता है फाइनल रिजल्ट? 0.2341। ठीक हो गया, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब इनइक्वालिटी आएगी तो क्या करना है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनको ऐड करना है। ये क्लियर है? ठीक है, अच्छा लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से हमने अब ये फाइंड करना होता okay, so now we want to find the probability that you get a factor of 25 less than or equal to 9 times out of 11. Less than or equal to 9 times out of 11. अब क्या करेंगे? अब देखिए लेस देन इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू 9 भी इंक्लूडेड होएगा। तो अब क्या करें, x इक्वल्स 0 प्लस x इक्वल्स 1 ऑल द वे अप टू x इक्वल्स 9। बस ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। आप बताएं, कैन वी डू इट quicker? तो 0 से लेकर 9 तक सारे केसेस निकाल के आप ऐड कर सकते हैं, बट कैन वी डू इट अनदर वे? 2 or 3 marks? है सारा पेपर ऐसे ही छोड़ता है, ये भी छोड़ देते हैं, भी छोड़ देते हैं, फिर ऐसे जी। अब क्या करें इसको? बाइनोमियल है, ज्योमेट्रिक कहां से आ गया? अभी जी बताएं, is there a quicker way of doing this? Is this the dramatic entrance for the lecture? No, it's not. अच्छा देखिए, हमने क्या कहा था, बाइनोमियल में n जो है वो है टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशंस। तो ये जो x है वेरिएबल, इसकी क्या वैल्यूज हो सकती हैं 0 से लेकर n तक?
0 1 2 3 4 ऑल द वे अप टू n। तो अब यहाँ पे हम कितनी दफा रिपीट कर रहे हैं इसको? अच्छा प्लीज यहाँ पे फोकस करें, हम कितनी दफा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें? वी डूइंग इट 11 टाइम्स। तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेसेस कितनी हो सकती हैं इसमें? 0 हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, ऑल द वे अप टू 11। 11 भी हो सकती हैं सक्सेसेस। 11 के 11 फैक्टर्स 25 आते हैं। 11 टाइम्स रिपीट करें ना, 11 के 11 जो है वो 1 या 5 में से कोई आ जाए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। उन सारे केसेस की आप प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो तो टोटल 1 होगा। तो हम बजाय इसके कि सब केसेस ऐड करें, वी कैन थिंक ऑफ इट द अदर वे अराउंड। वी कैन से कि अच्छा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से अगर हम माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग ग्रेटर देन 9, दैट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 10 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 11, तो हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। x इक्वल्स 10 और 11 यही दो केसेस रह गए ना सर, जिनको आपने नहीं इंक्लूड करना। तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से माइनस कर दिए वाले दोनों केसेस, तो आपके पास बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की 1 होती है ना, या तो वह है या वो नहीं हो रहा। टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 होती है। अब फेलियर्स की भी सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, वो भी टोटल 1 होएगा। बात ये हो रही है, अब देखें एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपकी एक सक्सेस है और 10 फेलियर्स हैं। अब जब 1 सक्सेस की बात कर रहे हैं तो उसमें सारे फेलियर्स तो ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट हो रहे हैं ना, कि 1 सक्सेस से 10 फेलियर्स हैं, फिर 2 सक्सेसेस और 9 फेलियर्स हैं। तो वो सारे पॉसिबल केसेस के अंदर ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट हो रहे हैं, बिकॉज अगर जितनी भी सक्सेसेस होंगी 11 माइनस दैट नंबर ऑफ फेलियर्स होंगे, तो सारे केसेस इंकॉर्पोरेट हो जाएंगे। ये क्लियर है सबको? 1 में से माइनस कर सकते हैं इस तरह से। ये क्या आते हैं? 1 minus 10, sorry 11c10 into 1 over 3 raised to the power 10 into 2 over 3 raised to the power 1 minus 11c11 into 1 over 3 raised to the power 11 into 2 over 3 raised to the power 0, and you can see what this turns out to be. ये क्या आता है नंबर? जल्दी बताएं। Very soft. Very soft. Very soft. तुम्हारे अनुसार बोला इशारा तो मेरा काम करते हैं प्रपोजर इट्स 0.998 0.9987. So this is the probability that we're getting. ये माइनस करने के बाद है yes 0.9998. So you're saying the final result is 0.99987, right? इनके पास क्या है, आपके पास क्या है? दिखाएं मुझे। 11c10 into 1 over 3 raised to power 10 into 1 over 2 over 3. अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि आप ना ये अलग अलग किया करें। अक्सर क्या होता है कि आप इकट्ठा करते हैं ना, कोई खेल सैर हो जाता है, आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, आपको पार्शियल मार्क्स भी कम मिलेंगे। अगर आप इंडिविजुअली सारे लिखेंगे, इन केस यू एंड अप डूइंग सम एरर समवेयर, बाकी आपकी वैल्यूज तो सही होंगी ना, एटलीस्ट सिर्फ एक आंसर का मार्क कटेगा। तो स्टेप बाय स्टेप करें, सारी वैल्यूज लिखते हैं। अभी देखिए आपने क्या किया, तो मल्टीप्लाई करके
ये क्या आता है, यही आता है 0.99987। विशाल आपको यही आ रहा है 99987, ठीक है, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ये हम करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। जब आप फिगर आउट कर लें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर इनइक्वालिटी वाला केस आएगा तो आपको सारे केसेस इंडिविजुअली ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। जीरो भी आ सकता है, जीरो वाला केस में इंक्लूड करना होता है, तो अपने ध्यान में रखना है। अच्छा अब देखें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसकी कुछ नोटेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन हम अब करेंगे ना, अभी बाइनोमियल कर रहे हैं, नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक करेंगे, उसके बाद नॉर्मल करेंगे। Each distribution has some parameters. Parameters का मतलब है there are some variables that are used to define to describe these distributions. इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं। बाइनोमियल को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास क्या होता है, आपको एक चीज चाहिए होती है n, which tells you the number of repetitions, the number of times you're repeating the experiment, number of trials or the number of repetitions। ये इसका एक पैरामीटर है। And the other parameter is probability of success. Okay, number of trials or repetitions, and the other is probability of success। ये दोनों चीजें डिस्क्राइब करती हैं एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। हम Q इसमें नहीं इंक्लूड करते बिकॉज Q तो P से आ सकता है। So this is the least amount of information that you need to describe a binomial distribution. जब P होगा तो Q तो आ ही जाएगा, Q is just 1 minus P, right? So इनको हम कहते हैं parameters of a binomial distribution। अब इसमें एक notation यूज होती है that you need to be familiar with। अगर कुछ इस तरह से लिखा हो x and then you have the sign called tilde and then you have b written after that, sorry, tilde, x and then this sign b और इसके अंदर लिखा हो n and p। इसका क्या मतलब है, x follows binomial distribution with n this value। in fact हम पहले ये लिख देते हैं, नोटेशन ये यूज होती है, b लिखा होता है और फिर n लिखा होता है और p लिखा होता है। इसकी एक एग्जांपल क्या होगी कि अगर आपके पास कुछ इस तरह लिखा हुआ है x and then the sign और आगे लिखा हुआ फॉर इंस्टेंस 11 and then 1/3, what this means is x follows binomial distribution। ये नोटेशन है, x follows binomial distribution with n equal to 11 and p equal to 1/3, ठीक है। ये नोटेशन आपको पता होनी चाहिए और ये पैरामीटर्स, ये टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। अक्सर वो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, राइट डाउन द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर्स आपको सब पता होगा कि ये क्या होते हैं, तभी आप लिख सकते हैं। पैरामीटर सिंपली क्या मतलब है, n की क्या वैल्यू है और p की क्या वैल्यू, वो आपको लिखने होंगे। और अगर नोटेशन यूज करता है वो, तो जो पहला नंबर लिखा होता है वो n, दूसरा नंबर लिखा होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। So b और फिर ब्रैकेट्स में 11 1/3 means it's a binomial distribution with n equal to 11 and p equal to 1/3। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास मीन के और वेरिएंस के भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय n times p। That's the mean formula for a binomial distribution।
वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम डिनोट करते हैं, हमने म्यू पहले यूज किया कहीं पे। म्यू भी एक सिंबल यूज होता है, एक नोटेशन यूज होती है मीन के लिए। ठीक है, हम ये डिस्ट्रीब्यूशन में अक्सर म्यू सिंबल यूज कर रहे होंगे मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले हमने देखी है एक्स बार फॉर मीन, ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वो भी कह सकते हैं इसको, राइट। और इसको अक्सर म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपको भी ऐड कर लेते हैं। मीन है या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स पी। वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं इस नोटेशन से, सिग्मा स्क्वायर। ये नोटेशन है वेरिएंस के लिए। दिस इज गिवन बाय एन पी क्यू, ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएंस। And then we also have standard deviation. Standard deviation is denoted by sigma. ये notation आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत यूज करेंगे आगे। Mu is for mean, sigma is standard deviation, sigma square is variance. Standard deviation क्या होगी? NPQ square। क्या हो रहा है? ऐसे वैसे वो तो अनाउंसमेंट नहीं होती है, बच्चा घूम गया है और यहाँ पे आके इसमें क्या मसला नहीं? Q1 minus Q। से मैंने वेरिएंस निकाल दिया, उसका z क्या है हम देख लेंगे। सर दैट्स नॉट स्टैंडर्ड डिविएशन। the phi सेपरेट करेंगे सब ये बताएं क्या क्या है। दैट्स स्टैंडर्ड डिविएशन सर। या अगर आप बातें नहीं कर रहे होते तो आपको समझ आ जाती। सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन। ये तो वैसी है ना, फेलियर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है तो फेलियर 1 माइनस। इसमें क्या मसला? अच्छा देखिए, अच्छा देखें, अच्छा देखें मेरी बात सुन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स जो हमने स्टार्ट किया था, हमने कहा था एक टेबल इस तरह से बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको यूज करके आपने अगर मीन फाइंड करना हो या वेरिएंस फाइंड करना हो, उसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं? सिग्मा एक्स पी इज फॉर मीन, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, दैट इज फॉर वेरिएंस। गिवन हो गया। लेकिन अगर आपको एग्जाम में इस पर रिलाई करना पड़ रहा है तो फिर मसला है। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको फॉर्मूला खुद से याद हो जाए। बैठ के रिटर्न लगाने, लेकिन आप जब 15-20% मिनिमम कर लेंगे, जब बार बार फॉर्मूला यूज कर रही हैं तो फिर वो खुद से याद हो जाएगा, राइट। फॉर्मूला शीट का फिर यही पर्पस है कि बस आप अगर आप उस पॉइंट पे भूल जाएंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर पी था, एक्स पी स्क्वायर था, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर लगा था या नहीं लगा था, वो आप जाके चेक कर ले, वेरीफाई कर ले। लेकिन कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि अच्छा इसी तरह का कुछ होता है, ओके। अदरवाइज फिर आपको नहीं समझ आएगी ये क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पे, कोई सोच रहे होंगे। अच्छा देखिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में हमने जब स्टार्ट किया था, हमने कहा था ये मीन और वेरिएंस के फॉर्मूलाज हैं। अब ये वर्क करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसके लिए हमें एक टेबल चाहिए होता है, ये वाला। टेबल में वैल्यूज होंगी तो फिर ही हम सिग्मा एक्स पी यूज करेंगे, फिर ही हम ये वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी वो फॉर्मूला चल सकता है, लेकिन वो फॉर्मूलाज यूज करने के लिए आपको एक पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए होगा। आपको एक वैल्यू एक रो में x, दूसरी वैल्यू में दूसरी रो में प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये टेबल बनेगा। इस टेबल में x की कितनी वैल्यूज हैं जो हम एग्जांपल कर रहे थे ऊपर? 0, 1, 2, 3 ऑल द वे अप टू 11।
हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी, हर x की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। फिर आप करेंगे सिग्मा एक्स पी निकालेंगे, सिग्मा एक्स पी निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर पी निकालेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी निकलेगा उससे, फिर वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूलाज यहाँ पे भी चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। पहले सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी, 0 की भी, 1 की भी, 2 की भी, ऑल द वे अप टू 11। टेबल बना के फिर आप वो फॉर्मूलाज यूज कर सकते थे। लेकिन अगर आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक डायरेक्ट तरीका है कि बस आप एनपी कर लें, डायरेक्टली मीन आ जाएगा। एनपीक्यू कर लें, डायरेक्टली वेरिएंस आ जाएगी। तो आपको वो सारी प्रोबेबिलिटीज लिखनी नहीं पड़ती, ठीक है। बाइनोमियल में ये डायरेक्टली मीन में आ सकता है और डायरेक्टली वेरिएंस आ सकता है। ये क्लियर है? ठीक है। ये बाइनोमियल के फॉर्मूलाज भी फॉर्मूला शीट में दिए होते हैं, उसने मीन दिया होता है, वेरिएंस दी होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन फिर आप खुद से निकाल सकते हो स्क्वायर रूट करके। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इसमें क्या मसला नहीं। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्कशीट, उसके बाद ब्रेक। एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ब्रेक। ठीक है, आयशा की क्लास है ना? तो विल डू वन क्वेश्चन, फिर उसके बाद ब्रेक करेंगे। आपका सिलेबस नहीं आता आपका फिजिक्स का? आखिरी चैप्टर कब तक खत्म होगा? आज खत्म हो जाएगा। नाउ यू आर नॉट मिसिंग क्लासेस। और किससे क्लास है? अबू बकर, अबू बकर की कोई सेक्शन है? अबू बकर आ रहे हैं क्या वैसे स्कूल आ रहे हैं? Does anyone know? अच्छी बात है। आयशा और कौन है? अब मैं नेक्स्ट सेक्शन से नहीं अलाउ कर रहा, बहुत मसला हो रहा है इसका। अच्छा देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं वर्कशीट से। अच्छा, अब जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं? Okay, let's try this. Question number 22 from the worksheet. ये एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद we have a break. Okay? अभी देखें, इट्स अ प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड वन, लास्ट पार्ट इसका स्पेसिफिकली। इसके बाद फिर आप सारी वर्कशीट कर सकते हैं, बिकॉज यही एक कॉम्प्लिकेशन है जो आती है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, जो लास्ट पार्ट में आ रही है। The probability that Sue completes a Sudoku puzzle correctly is 0.75. She attempts n puzzles, find the least value of n. In fact, the first part is also a good one. Sue attempts n Sudoku puzzles, find the least value of n, for which the probability that she completes all n puzzles correctly is less than 0.06. अभी एक सेंटेंस में बहुत सारी चीजें इसने बात की हुई हैं। Can anyone explain to me what this means? समझ आ रहा है क्या रखा है? इससे उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इज 0.06 और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.06 है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो 0.75 है। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं। नहीं, is it binomial distribution or not? First of all, नहीं, सर यही है क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड है। पता होना जरूरी नहीं है, फिक्स होना जरूरी है। फिक्स तो है ना, एन है, फिक्स होना जरूरी है। ओके, सक्सेस और फेलियर भी फिक्स है। डू वी हैव सम रेपिटेशन? शी इज सॉल्विंग मल्टीपल पजल्स, रिपीट हो रही है कोई चीज। डू वी नो हाउ मेनी टाइम्स शी इज रिपीटिंग दैट? एन मतलब फिक्स्ड है वो नंबर, एन टाइम्स रिपीट हो रहा है। एक मिनट सब, ठीक है, एन टाइम्स, एक मिनट सब, एन टाइम्स रिपीट हो रहा है।
Yeah, but every time the probability of her solving the puzzle correctly is 0.75. अभी देखते हैं एक दफा पजल करेक्टली सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.75. Can we say there are two possible outcomes? She either solves the puzzle correctly or she does not solve the puzzle correctly. हर दफा इक्वल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, हर दफा 0.75 प्रोबेबिलिटी है सही होने की. So this is binomial distribution जिसमें हम सक्सेस क्या कह रहे हैं? Completing a Sudoku puzzle correctly, this is what we are calling a success. Okay. Probability of success is 0.75. N हमें नहीं पता अभी. So we can say this is a binomial with n equal to n and probability of success 0.75, probability of failure 0.25. ये एक पजल की बात होती है. सक्सेस और फेलियर डिफाइंड होते हैं एक रेपिटेशन के लिए. अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? She attempts n puzzles. Find the least value of n. Now leave this for a moment. ये हम इस पे आते हैं, n की वैल्यू फाइंड करनी है. लेकिन क्या कंडीशन दी हुई है? For which the probability that she completes all n puzzles correctly. ये जो probability है ये 0.06 से कम है. n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? हाँ, so that's exactly what we're going to do. सबसे पहले इस पार्ट पे फोकस करेंगे. मैंने हाईलाइट किया है probability that she completes n puzzles correctly. पहले ये वाली probability हम फाइंड कर लेते हैं. Probability that she completes n puzzles correctly. How do we find this? Formula क्या था? x equals r की probability is NCR p raised to power r q raised to power n minus r. अब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं probability that x equals n. ये फाइंड कर लेते हैं कि वो सारे puzzles correctly solve कर रही है. ये probability क्या आएगी? NCN into 0.75 raised to power n into 0.25 raised to power 0. Yeah. हाँ, अभी देखते हैं. NCN क्या होता है? NCN is 1, 66 is 1, 4C4 is 1, right? जब दोनों नंबर सेम होते हैं ये 1 आता है. So you have 1 into 0.75 raised to power n into 1, which is 0.75 raised to power n. So the probability that she completes all n puzzles correctly is 0.75 raised to power n. अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है this probability is less than 0.06. तो ये जो आपका रिजल्ट आया है इसको आप कहेंगे this should be less than 0.06. अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, आपके पास n का रिजल्ट आएगा. हाउ डू वी सॉल्व दिस इनइक्वालिटी? n पावर में है, लॉग यूज करना पड़ेगा इसका. तो हम क्या करेंगे? लेट्स टेक log on both sides. ln of 0.75 raised to power n. हम उसी तरह जिस तरह नॉर्मल इक्वेशंस में करते थे इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं. This becomes less than ln of 0.06 and that gives you n into ln of 0.75. That is less than ln of 0.06. नहीं, ये नहीं करना. ये आज जाके आपने वहां पे डिवाइड करना है. लेकिन उसमें एक मसला है. दिस इज एन इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी में यू हैव टू बी केयरफुल कि जो नंबर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव तो नहीं है. ln और या कोई भी log 1 से छोटे नंबर्स का आप लेते हैं ना वो नेगेटिव रिजल्ट आता है. तो ln 0.75 is actually a negative number. So I would recommend आप डिवीजन करने से पहले इसको इवैल्यूएट कर लें ताकि आपको नजर आ जाए सामने अच्छा ये नेगेटिव नंबर है. ठीक है? ln 0.75 पहले इवैल्यूएट करें, क्या आता है? नहीं, इट्स एन इनइक्वालिटी. भी देखते हैं. ln 0.75 that equals minus, sorry, that's less than minus 2.813. Okay, this is what we are getting.
Now we take this negative number to the other side. जब ये negative number से divide करेंगे, inequality का sign reverse हो जाएगा, right? Negative number से divide करें, अब ये क्या आता है? n is greater than 9.77. उसने कहा है 9.78. उसने कहा है what's the least value of n for which this condition is true. Least value of n क्या होगी? Given this condition, n is supposed to be an integer, the number of puzzles she is attempting. तो least n क्या होगा? 10. Greater than 9.78 है ना? अगर ये अच्छा इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, ग्रेटर देन अगर 9.1 भी होता तो आंसर 10 ही होता, राइट? बिकॉज़ 9.1 से बड़ा आपने देखना नंबर कोई, व्हाट्स द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट्स ग्रेटर देन 9.1, दैट्स 10. ओके, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ 10 आ गया. इसमें क्या मसला नहीं? ओके, लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट, पार्ट 2. पार्ट 2 में वो कहता है she attempts 14 puzzles every month. The number that she completes successfully is denoted by x. Find the value of x that has the highest probability. You may assume that this value is one of the two values closest to the mean of x. अच्छा, अब देखें. She's attempting how many puzzles? 14 puzzles every month. अब ये एक और binomial distribution है जिसका n क्या है? 14. Right? Probability of success and failure, they're still the same, 0.75 and 0.25. उसने कहा find the value of x that has the highest probability. अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x क्या रिप्रेजेंट करे? x is representing, क्या लिखा है? Yeah, the number that she completes successfully is denoted by x. 14 में से कितनी सक्सेसेस है? That's what x is. x की वैल्यूज क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 all the way up to 14. सारी प्रोबेबिलिटीज में से कौन सी मैक्सिमम है? आपको तो ये सारी फाइंड करनी पड़ती और फिर उनमें से देखते कौन सी मैक्सिमम है. अगर उसने कोई हिंट ना दी होती तो आपको यही करना पड़ता, सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती और देखना पड़ता कौन सी मैक्सिमम. उसने आपको बता दिया है you may assume that this value is one of the two values closest to the mean of x. तो अगर आप मीन फाइंड कर लें पहले x का, उसके पास जो दो वैल्यूज होंगी उनमें से कोई एक होगी, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें. अभी देखते हैं. n equals 14, p equals 0.75, q equals 0.25. How do you find mean of this? Mean का क्या फॉर्मूला है? Mean of x या mu is equal to n times p. n is 14, p is 0.75. What does that give you? 10.5. 10.5 के पास कौन सी दो वैल्यूज है? 10 या 11. तो या तो x इक्वल्स 10 की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी या x इक्वल्स 11 की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी. दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल लें, जिसकी ज्यादा है वो मैक्सिमम होगी. ठीक है, तो x इक्वल्स 10 भी निकाल लें, x इक्वल्स 11 भी निकाल लें. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 10, this is going to be 11c10 into p, which is 0.75 raised to the power 10 into 0.25 raised to the power 1 plus 11c, no sorry, 14, sorry, yeah, 14 था यार, मैंने 11 ले लिया. 14c10 and then you have 4 here. ये आगे x equals 10, ये फाइंड करते हैं क्या आती है? 14.092. प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है? 14c11 into 0.75 raised to power 11 into 0.25 raised to power 3. अच्छा, कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, थोड़ा सा साथ साथ सोचना भी है. इज इट इवन पॉसिबल?
प्रोबेबिलिटी 14 हो सकती है, नहीं हो सकती ना? 0.220. What about the other one? 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये भी लिख सकते हैं और 2 to 0 करते हैं, ठीक है। आगे x equals 11 0.240. तो हमने सिर्फ क्या करना था, किसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, राइट? सो वी कैन से x equal 11 has the highest probability. ठीक है, x equals 11 has the highest probability. That is what we were looking for. इसमें क्या मसला? So we could put it into this number because 11 has a higher probability. You should specify it. How could it be two different numbers? आप ये निकालिए, आपने कहा था कि इनकी इनमें से किसी एक की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, हमने दोनों की फाइंड कर ली, 11 की हाईएस्ट आती, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला निकालना था ना x. Then you have to check all the values from 0 to 11. But generally in binomial distribution that is true in general. Yeah, but generally binomial में ऐसे ही होता है कि जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है ना वो मीन के पास होती है। उसने यहाँ पे बता दिया आपको, but that's a general rule for every binomial distribution. मीन के पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे मीन से दूर जाते हैं प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती है। आप खुद भी यूज कर सकते हैं, खुद ही आप मीन के आसपास वाली वैल्यूज देख लें, वो आप खुद से कर सकते हैं। इट्स अ जनरल रूल, मतलब क्लोजेस्ट वैल्यूज 10.5 है ना, तो उससे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है? 10 है, 11 है, राइट? अच्छा, लेट्स डू द लास्ट पार्ट एंड देन वी हैव अ ब्रेक। अभी लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो इससे क्या क्या वजह? She was solving 14 puzzles every month, remember? 14 puzzles every month. ऊपर कह रही थी उसने, यहाँ पे आपको बताया। Find the probability that in exactly 3 of the next 5 months she completes more than 11 puzzles correctly. Next 5 months में हर month में she is solving 11 puzzles. She is solving 14 puzzles. क्या probability है कि 5 में से 3 months ऐसे होंगे when she solves more than 11 puzzles correctly? अब ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? दिस इज अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और n क्या है? अब अभी देखिए n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? हमने फाइंड क्या करना है, देखे ना, probability that in exactly 3 of the next 5 months she solves more than 11 puzzles correctly. तो अब 5 times रिपीट कर रहे हैं हम कोई चीज, राइट? 5 times रिपीट कर रहे हैं, 5 में से क्या probability है of getting 3 successes? What's the criteria of success? एक मंथ कब सक्सेसफुल है उसके लिए? जब उसने उस मंथ में 11 से ज्यादा पजल्स करेक्टली सॉल्व किए। This is the criteria for success. Completes more than 11 puzzles correctly. This is what success is. ठीक है? This is the criteria for success. So now again we have a binomial distribution. हमने find क्या करना है? हमने find ये करना है कि आपके पास 5 months हैं, उनमें से क्या probability है कि exactly 3 successes आए? ये probability find करनी है। What's the probability of success? Success defined कैसे है? Success is defined like this, that she solves more than 11 puzzles correctly. In the month. For a month, the success criteria is she solves more than 11 puzzles correctly. What's the probability of success? ये हमारे पास नहीं है, ऊपर हमने इतने निकाली।
तो 11 की प्रोबेबिलिटी निकाली थी ना, 11 सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज मोर देन 11, नहीं मोर देन 11 मींस 11 से ज्यादा। तो सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है? शी सॉल्व्स मोर देन 11 पजल्स करेक्टली इन द मंथ। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे आएगी? ये आपके पास आएगी दूसरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। जो ओरिजिनल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें क्या था? जो ओरिजिनल एक मंथ के अंदर क्या हो रहा है ना, पहले अभी हम 5 मंथ को देखते हैं, अब जूम इन करें एक मंथ की बात करें। एक मंथ में क्या हो रहा था? एक मंथ में you were solving 14 puzzles. What was the probability of success for one puzzle? 0.75. Probability of failure 0.25. यहाँ पे success criteria क्या था? She solves one puzzle correctly. She solves the puzzle correctly. This was the criteria for that inner binomial distribution. इसमें आप क्या करें? x greater than 11 की probability निकाल लें। ये कैसे आएगी? x equals 12 plus x equals 13 plus x equals 14. That gives you 14c12 into 0.75 raised to power 12 into 0.25 raised to power 2 plus 14c13 into 0.75 raised to power 13 into 0.25 raised to power 1 plus 14c14 into 0.75 raised to power 40 into 0.25 raised to power 0. What's the result that we get from this? Final result? 0.180. 4 significant figures. 180 के बाद 1801 plus next 0.180. अच्छा ठीक है, 02 हो गया। फिर नेक्स्ट मोहम्मद के अलावा बाकी सारे पास की कैलकुलेटर है मेरे ख्याल। तो अब डिफरेंट कैलकुलेट करें ना, वो भी सेकंड कर रहे हैं, कोई थर्ड करके बता दें। 0.08 32 आगे। अच्छा फिर थर्ड 0.75 raised to power 14 82। ओके, इन सब का सम 0.2812। ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग मोर देन 11 पजल्स करेक्टली इन 1 मंथ। ये आपकी जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बन जाएगी फॉर दैट आउटर बाइनोमियल। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बन जाएगी। ये क्या है? 0.2812. What about probability of failure here? 0.7188। अब इसमें आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x equals 3 निकालनी है। वो क्या आती है? 5c3 into 0.2812 raised to power 3 into 0.7188 raised to power 2, and that should give you the result. ये क्या आता है? That is your final answer. तो इसमें क्या हो रहा है? एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालने के लिए आपको एक दूसरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करनी पड़ रही है। सो इट्स अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड अनदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इंसेप्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यू विल सी लेटर, आप आगे जाके देखेंगे बाइनोमियल के अंदर ज्योमेट्रिक भी आ जाएगी, बाइनोमियल के अंदर नॉर्मल भी आ जाएगी।
think I want to solve that. This is way harder than this is on. But way more interesting. No, it's not. No, it's you just want to just take देखिए बाइनोमियल आपके पास एक आउटर डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, एक और बाइनोमियल यूज की. हम आगे जाके देखेंगे बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालने के लिए आपको कभी कभी कोई और ज्योमेट्रिक यूज करनी पड़ेगी, कभी कभी कोई और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी पड़ेगी. दिस इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स इन दीस टू टॉपिक्स. ये तो एक दफा आपको समझ आ गया तो बस हो जाएगा. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको समझ आ भी गया तो थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है उसमें, कोई नई चीज आ सकती है उसमें. सही है, इसमें कुछ नया नहीं आता है सच. तो आपने जब सारे केसेस एक दफा कर लिए तो फिर अगर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट सही समझ आ गई तो आप हो जाना चाहिए. ऑलराइट, ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 5 minutes. 9 minutes. We resume at 10:35. 10:35 आ चुके. 10:35 पे resume करें. क्या करें? जीरो वेरी यार मतलब क्या सारे पार्टियां आ रहे हैं कैलकुलेटर में डालो. अरे ये
एलसीएम का क्या है? इस तरह से कुछ किया होता है। इसमें से नहीं होता। सर बात में एक तो दिक्कत है कि
common. Teachers minus if the answer is 10 over 8, then they are like expecting instruments in the lab. Class basically expects you to be able to estimate this. 3 answers pass. ABC. क्या ये possibility है कि सारे numbers का वो सामने होगा कि नहीं? That's right. आप देखिए 10 next number is equal to 1. अब जो सीमा के बाद next है अब लार्जेस्ट नंबर जो आपके पास है वो क्या है 0.3 कैलकुलेट क्या 1 over 3 की 0.1 से होता है like 0.1 से होता है तो 1 over 3 है और उसको एस्टिमेट के आसपास 1 over 25 so 25 को 3 से मल्टीप्लाई करके 100 क्रॉस होता है 3 over 100 log is 0.2 maximum कितना है 1 over 80 is 0.01 80 is 0.01 0.4 तक गया 3.43 तक गया 3.45 तक गया 4.6 तक गया 4.7 तक गया तो ये approximately 0.5 से 100 सबको ऐड है उसका नंबर है That's definitely the NCQ is they expect you to they expect you to eliminate something.
अगर इन तीनों से ग्राफ से होता है फिर हमारे पास और कोई तरीका नहीं होगा एक्सेप्ट this is the only answer for against this is an alternative that eliminate this. 1 plus 4 over 7 plus 9 over 7 squared plus 16 over 7 to the power. Numerator में you have n squared over 1 7 yeah n square का सम क्या होता है n squares का सम तो इसको भी करना है ऊपर आपका स्क्वायर्स है अब इसके आंसर्स हैं कौन से ये है 1.5 ये 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 थोड़ा सा ज्यादा है ये 1.6 के आसपास और ये बात नहीं ओ ये मेरा साइड है ओ माय गॉड कुछ समझा नहीं मामा ने साइड करेंगे सामने do it up to a particular time आपको पता चलेगा डिनोमिनेटर में होगा यदि सब कैंसिल लेते हैं डिनोमिनेटर में बड़ा 7 raised to 1 इसकी हायर होगा न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म क्या होती है 7 raised to 1 let's this 100 here sir फॉर्मूला ये क्या होता है plus first 1 plus 9 to 7 raised to power 98 plus 6 7 raised to power 97 plus 25 Sir, how is giving the upcat like how is without it? Wait, all everyone is so confident.
Sir, can I solve the LCAT exam? लेकिन सवाल नहीं There's no, I mentioned that PDF is like 2 pages from 2016. Basically, back in 2016, Moms launched their smart video because you think some stats on something. They removed it. They didn't remove it. Yeah, that's what I'm saying. They finished it. Oh my God. Oh my God. No, she was biology. They lost the PDF of like a sample paper, just like 4 questions. It's like 4 questions from 2016, and they've never lost it. This is more like Olympiad math, which I could do at that time, but I can't do anymore. Sorry? They should be able to think. They do. They don't expect you to get full marks in this. Nobody would get full marks in this. They're just yeah, because that is pretty easy. That's O-level math. We have it every year. Alumni homecoming. ITU की faculty ये अभी जो बैग गिरा था उस वजह से हो गया ना ITU का CS डिपार्टमेंट इज क्वाइट गुड CS नहीं फास्ट से बेहतर नहीं लाहौर में आई वुड से द थर्ड बेस्ट ऑप्शन लम्स फर्स्ट एंड देन ITU CS में बिजनेस स्कूल इसका जिसमें मैं पढ़ाता था इट वाज लाइक LUMS is better if you want to go for further studies afterwards. Fast is better आपने और बात काम करना है इंडस्ट्री में लेकिन LUMS भी उसके लिए अब उस लेवल पे है पहले शुरू में कहते थे कि नहीं है इतना अब LUMS इस तरह से हो गया हाँ it's not value for money if you're going on scholarship or financial aid then yes but if you're not getting financial aid अब नहीं है बिल्कुल भी हाँ और जब तक आप जाएंगे वो एंड तक तो 20 लाख हो जाएगा इट्स नॉट वर्थ इट आई डोंट थिंक इट इज अगर तो या तो आप फाइनेंशियल एड पे जा रहे हैं ठीक है हाँ या फाइनेंशियल एड पे जा रहे हैं या आप टॉप 3 में है जिसमें आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिल रही है ठीक है या फिर आपके अब्बास हैं वो बिलियनर हैं तो फिर वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनका अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर ठीक है ये लगा दो अगर उनको फर्क पड़ता है इवन इफ ही इज लाइक वेरी ही इज वेरी वेल ऑफ यू आर वेरी वेल ऑफ अगर उनको फर्क पड़ता है कि अच्छा ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी है आई डोंट थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी मतलब अपने CS में जाना है तो यू हैव अ बेटर ऑप्शन यू हैव अ सिमिलर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ पास CS में जाना है जॉब मार्केट लम्स की बहुत अच्छी है लम्स के अब जो है वो इंडस्ट्रियल लिंकेज पाकिस्तान में IT कंपनीज में भी बहुत है पहले कहते थे कि फास्ट जो है वो इंडस्ट्री में ज्यादा उसकी प्रेजेंस है बिकॉज लम्स का भी शुरू हुआ था CS प्रोग्राम बट अब तो उसको बहुत साल हो गया दैट्स वेरी स्टैंडर्ड और लम्स का वो है कि लम्स में आप एक नेटवर्क ज्यादा बेहतर बनता है वो एक होता है और ग्रूमिंग आपकी ज्यादा बेहतर हो जाती है प्रेजेंटेशंस कर करके तो वो तो है
लेकिन वो सिर्फ आपको पे but it only matters for like the first few years of your work टाइम उसके बाद करनी है. लाम्स का ये फायदा है कि उसमें ना आपके इलेक्टिव्स बहुत सारे हैं, तो आप साथ जो है ना बाकी कोर्सेज ले रहे होगे. कोई आपके कोर्स जो है वो आप मे बी कोई सोशल साइंस का कोई कोर्स ले रहे हो, कोई आपने दरम्यान में जो है वो कोई और भी पढ़ लिया. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में तो आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी वो भी पढ़नी पड़ती है, ऑल्दो उसका कोई फायदा नहीं होता सीएस में आपको ऐसा. हम लम्स पढ़नी पड़ती है. लाम्स में आपको फर्स्ट ईयर में वो सब कुछ पढ़ाएंगे. अगर आप इंजीनियरिंग स्कूल में जाते हो तो आपको लाम्स की सोशल लाइफ तो वैसे अवॉइड ही करनी चाहिए बंदा को. जिस तरह की सोशल लाइफ है. सॉरी, बाहर इस तरह की हरकतें नहीं होती, इंस्टाग्राम्स में होती हैं हरकतें. बाद तमीजदार लोग होते हैं वहां पर, उनको पता होता है कि भाई एकेडमिक एनवायरनमेंट में ये हरकतें नहीं करनी जो वो लम्स में कर रहे होता है.